So students, class 6, all of you, good afternoon. Teachers, good afternoon. तो चलिए, so you must, अच्छा मुझे आप ये बताइए, how many of you have sumptuous breakfast? Sumptuous means sufficient breakfast in the morning. जो थोड़ा खाना खाकर आते हैं, ये नहीं कि खाली दूध का गिलास पिया और आ गए. How many of you? कोई फ्रूट्स, कोई परांठी, कोई रोटी खाकर आते हैं. वेरी गुड. पीसी में बहुत ज्यादा है. मैक्स से ऑल्सो, पुल्सर ऑल्सो. वेरी गुड. मेनी स्टूडेंट्स है ना. पद्मश्री में नहीं खा के आते, इनकी मम्मियां देती नहीं है. हैंड्स डाउन. ठीक है. मम्मियां देती नहीं बेटा कि किड़े सवेरे सवेरे उठे बच्चे रोटियां बना के दे. आई डोंट थिंक कि एनी मदर कैन डू दैट. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. ठीक है बेटा. व्हाट हैपेंस, लिसन टू मी, द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर. व्हेन माय डॉटर वाज लाइक एट योर एज, है ना. So then one of my student who is now a neurosurgeon, he told me my daughter when she was very young, बहुत छोटी थी, so she used to have one glass of milk and then went to school. But my one of the student, I told you, who is a neurosurgeon, brain का doctor है, he told me कि ma'am always give her something to eat because in the morning, remember that everybody here, बैठ जाओ. पद्मश्री गर्ल बैठ जाओ बेटा, अपनी सीट पे बैठो, घूमो मत. बॉटल्स भर के ले आए हो अपनी सहेलियों के लिए, बैठ जाओ और स्क्रीन पे ध्यान दो. मॉर्निंग में अवर मेटाबॉलिज्म इज मैक्सिमम. हमारे अंदर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द रिएक्शंस इन अवर बॉडी आर मैक्सिमम एट दैट टाइम. जो सुबह का खाना है, हम कहते हैं ना इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है, इनसे कुछ लगता ही नहीं, एना खांदा है फिर भी पतले का पतला है ना. या स्टूडेंट इज वीक इवन दो, द चाइल्ड इज वीक इवन दो वी गिव देम फूड प्रॉपरली. बट व्हाट हैपेंस that in the morning that food we eat gives us maximum nutrients. Remember that. Max say girls idhar, see here on the screen, pen नीचे, कॉपी नीचे, everybody. और सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठो. टेबल पे लाइन नहीं करना है, हमने कुछ नहीं लिखना है, हमें जरूरत नहीं है. बुक्स अंदर रखो. So what you eat in the morning, everything you eat does not go into your body, does not get converted into useful products. Some gets converted into harmful products. Some is removed from your body as such. The morning breakfast which you eat is maximally used by your body. उसके न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा. इसलिए मॉर्निंग में हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि बर्गर खा के आओ, पिज्जा खा के आओ. वैसे तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे, बट नेवर इन द मॉर्निंग. हैव हेल्दी डाइट. हम ज्यादा परांठे खाते हैं, है ना. वी पंजाबीज लव परांठास. यस. हाउ मेनी ऑफ यू लव परांठास? Everybody, me too. But hands down. But eat pranthas, not aloo pranthas always. Stuffed with paneer, rich of proteins. Stuffed with green vegetables, right? सर्दियों में आती है. पालक हो गया, मेथी हो गई. Stuffed with, carrot, radish, है ना. And don't fry it, but put makhan on the dry prantha. It will be much good for your health rather than frying it, right? But eat roti, chapati, या और prantha, or porridge, dalia, या oats, or poha, या upma in the morning, definitely along with a glass of milk or along with the curd, because that is maximally used by the body. Second thing, ईटिंग द सेम थिंग. रोज हम आलू के पराठे खाई जा रहे हैं, हमें तो वही अच्छे लगते हैं, हम तो तीनों टाइम वही खाएंगे.
मम्मी कहती है चल मेरा बच्चा कुछ तो खा रहा है, कोई बात नहीं मैं आलू के परांठे बना देती हूँ। दिस इज द नेचुरल अप्रोच ऑफ मदर्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट? कि बच्चा कहता है मम्मी मैंने तो रात को भी आलू के परांठे खाने हैं, मैंने नहीं सब्जी ये खानी। बट वट विल हैपन इफ द चाइल्ड, मम्मी कहती है चल कुछ ते गया ਇਹਦੇ अंदर, पेट ते भरिया। No, this is not good. Why? Because it is not a complete diet. Eating the same food daily will make you deficient in some nutrients. It will not, you will never be healthy if you eat. हम कहते हैं हम तो सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते हैं, हम तो कुछ और खाते नहीं, हम चपाती भी नहीं खाते, हम तो घी भी नहीं डालते, हम सिर्फ मेथी जो है उसको ड्राई भून के बस वही खाते हैं, हम सिर्फ सैलेड्स खाते हैं, हम कुछ नहीं और खाते। But that is also bad because green vegetables give you some vitamins, give you some minerals. But what about carbohydrates? What about proteins? And you know that you must have heard, सीधे होके बैठो गर्ल्स, मैं से सीधे बैठो, सुन रहे हो, सीधे बैठो, ज्यादा समझ में आएगा, सीधे बैठो, टेबल पे लाई मत, बैक स्ट्रेट। So what happens that fats are also essential. Why? आजकल मम्मियां कहती है बच्चा हमारा मोटा हो रहा है, इसको बिल्कुल घी नहीं देना, कुछ फ्राइड नहीं देना, इसको रोटी भी सूखी दो। No, this is not correct. Fats are important because it keeps your skin glowing. It helps in proper functioning of the brain. Fats are required for the brain. That's why आजकल लोगों को भूलने की बीमारी होती है, बट जब मेरी दादी नानी होती थी वो तो 90 या उससे भी ऊपर वाली एज में जाके उनकी डेथ हुई है, उन्हें कोई भूलने की बीमारी नहीं थी, because they had always desi ghee in the milk, in their food. सब्जी में डाल दो देसी घी, दाल में डाल दो, कड़ी बनाई है तो इसमें तो ज्यादा डालो देसी घी, है ना? सो देसी घी इज यूजफुल, ठीक है, अगर वो सच में देसी घी, इट इज अ यूजफुल फैट, नॉट फॉर ट्राइंग but eating raw with chapati. So fats are important because they keep our brain healthy, right? Proteins. Why proteins are called as building blocks of our body? Yes, anybody who can tell me why they are called as building blocks? हाँ जी, ऑस्कर में एक बच्चे का हाथ खड़ा था, यस, कम, माइक ऑन करो और बताओ जल्दी से, उधर चला गया। चलिए मैं लेट मी टेल, क्लास 6 है जी, ऑस्कर में दमनप्रीत, दमनप्रीत इज देयर, ऑस्कर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, इफ यू नो द आंसर प्लीज कम। वाई? जल्दी से आओ, भाग कर आओ दमनप्रीत, उसके बाद हम सूर्य चक्र पे भी जाते हैं। पहले हम दमनप्रीत से पूछ लें, वाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स? चलो बता दो बेटा, बताओ, सुन लो, माइक ऑन करो, somebody इसकी हेल्प करे माइक ऑन करने में, बताएं इसको। हाँ, बोलिए बेटा। आप कौन करा रहे हैं? वाई प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्यों कह दिया ऐसे, रट्टा मार दिया, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक, वाई? पता है बेटा दमनप्रीत आपको कि नहीं? Yes, nobody else, only Daman will tell. Yes. Ma'am, please repeat the question. Why proteins are called as building blocks of our body? चलिए आप बैठिए, देर इज वन गर्ल इन सूर्य चक्र, मिडल रो सेकंड गर्ल, हाँ जी, आ जाओ जल्दी से आओ। ऑस्कर बेटा अपना माइक ऑफ करो और फिर सूर्य चक्र वाले बताएंगे, हाँ, माइक ऑन करो सूर्य चक्र, हाँ जी। They are essential for growth and development. दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, समथिंग एल्स, और भी कुछ बताइए मुझे।
Huh? They had been made up of muscles. अच्छा, they form muscle. और कुछ? बैठिए बैठिए बैठिए. You know, let me बैठो. लिख लेना है अगर आपको नहीं पता. So, you know, our hair, beautiful hair of yours, right? The girls in, all the GTPBS classes, beautiful hair. They are formed of proteins. ये किसके बने हैं? Proteins के बने हैं. The bones, calcium हम कहते हैं, but bones also have lot of proteins. So bones की health के लिए, along with calcium, we should have protein. Then muscles require proteins for formation. In the skin, there are proteins. Then another is red blood cell. इधर देखो, red blood cells में क्या है? Hemoglobin है. The red pigment hemoglobin. How many of you have heard about hemoglobin? Very good. सबने सुना है. Hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is again a protein. ये भी एक protein ही है. Then what we say कि our immune system is strong. We can fight with diseases. मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो गली से जो है गोलगप्पे खा सकता हूँ. Why? Because my immunity is strong. So immune system is strong because it is formed of protein. So our immune system, our muscles, our hemoglobin, our hair, our skin, all these are formed of proteins. That's why proteins are building blocks of our body. लिखो अपनी worksheets पे, everybody. Most of the structures in our body, write down. Most of our structures in our body are formed of proteins. For example, write down the example. I am writing it here. Skin, hair, muscles, bones, hemoglobin, immune system, and many more, but all these are formed of proteins. Write down all these. So, question number 4 in your worksheet. पहले ये लिख लो. Write down these. Then do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे फटाफट से ABCD कौन सा आंसर है जल्दी से बताएंगे. आई थिंक एवरीबडी, यस, टेल मी. ABCD. यस, इट इज B, नॉट C. कुछ बच्चों ने C कहा है बट नॉट C, इट इज B. It forms most of the structures in our body. That's absolutely right. So one of the nutrient is proteins. Then when you eat rice, when you eat potato, what is present? Which nutrient is present in it? Raise your hands. Tell me.
Yes, in Noble. In Noble, the first bench, third student. Yes. नोबल में आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। बेटा इसको आने दो जल्दी से। यस, स्विच ऑन द माइक। Carbohydrate. Yes, carbohydrates are present. That's potato, rice, they have carbohydrates. Carbohydrates are sources of energy. Then who will tell me how carbohydrates provide energy? Tell me, जल्दी से। Yes, नोबल में ही सेकंड बेंच पे आई थिंक एक और बच्चा है, आ जाओ आप बताओ। How carbohydrates provide energy? By बाय रेस्पिरेशन। आई थिंक आपने रेस्पिरेशन का है, रेस्पिरेशन क्या है हम वो बात करते हैं। बैठो, वेरी गुड वेरी गुड। सो लेट्स सी दैट। यू नो कार्बोहाइड्रेट्स आर द, इधर देखना ध्यान से, पहले बाद में लिखना है कॉपी में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप खेल के जाते हो है ना, आपको पसीना आया हुआ है, खेल रहे हो, तो मम्मा आपको क्या देती है, भी ग्लूकोज वाला पानी पी लो। और इफ यू आर ए प्लेयर, यू आर इन ए टीम, देन इट इज असेंशियल कि जो आपके कोच है आपको कहते हैं कि ग्लूकोज वाला पानी लेके आया करो। वट इज ग्लूकोज? Glucose is a carbohydrate. What are starches? Starches are the carbohydrates, right? So पहले तो लिखो, write down examples of, मैं sources की बात नहीं कर रही हूँ, examples of carbohydrates. First is starch, second is glucose. है तो बहुत सारे हैं, but these two are made, starch and glucose. There are many more, but up to your level you should know. Now, carbohydrates provide energy. How they provide energy? Let's see that. So you can see this. This is a wood. When it burns, it gives energy. Yes or no? Wood पड़ी हुई है तब तो नहीं ना एनर्जी देती, जब हम इसको बर्न करते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती। Likewise, glucose goes into our body, goes into different parts and burns. How carbohydrates provide energy? As they burn in our body cells. Our body is formed of several units called as cells to give energy. Right? एनर्जी हमें बर्निंग से ही मिलेगी, चाहे बाहर है चाहे हमारी बॉडी के अंदर है, एनर्जी हमें बर्निंग से ही मिलती है। इज इट ओके? देयरफॉर यहां लिखो, ये राइट डाउन इन योर वर्कशीट, पीछे वाली आपका पेज खाली है, उस पर लिखो देयरफॉर carbohydrates act as fuel in our body. Not in our body, no living organism. Carbohydrates act as fuel. Then one more point. The process of burning in our body is called as respiration. You will do respiration in class 7, but is process ko, because the student has told me
that respiration provides energy. That is absolutely correct. But what is respiration? It is burning of carbohydrates. Is it okay? How do the carbohydrates provide energy? I think everybody knows now. क्वेश्चन नंबर 1 करना जरा. क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखने के बाद डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड टेल मी आंसर. ए बी सी डी. एवरीबडी एवरीबडी सबके हाथ खड़े होने चाहिए. पद्मश्री कौन सा आंसर है? ए बी सी की डी. जल्दी से रेज योर हैंड्स. कौन सा बेटा मैक्स से में कौन सा? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? इट इज ए. बिल्कुल ठीक है. आंसर इज ए. दैट इज दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन. एक मिनट. देयर प्रोडक्ट्स helps in. Carbohydrates are energy providing foods because they are used in respiration to provide energy. वो respiration में use होते हैं to provide energy. They are burnt in respiration to provide energy. Right? So one nutrient is carbohydrates, second is protein. Now I am asking. अब देखो जरा जल्दी से. अपनी कॉपी में अपने असाइनमेंट में लिखो. नेम द डिजीज caused by deficiency of proteins. ये मुझे आपने बताना है. और एक और लिखिए. नेम द डिजीज. राइट डाउन. caused by deficiency of both carbs. Carbs means carbohydrates. Carbs and proteins. Name the disease. Write down these. कौन बता रहा है आंसर मुझे? सिक्स पीसी में कौन बता रहा है? यस एनीबडी? नोबडी नोज. यस सूर्य चक्र. सूर्य चक्र में एक बच्चे का हाथ खड़ा है. आजा बेटा. क्वेश्चन लिख लिए आपने ये? हाँ जी बेटा बोल. कौन सा डेफिशिएंसी ऑफ बेटा? यस टेल मी. अच्छा मैं आप तुम्हें दे रही हूँ. वन डिजीज इज क्वाशियोर्कर, अनदर इज मरासमस. देख के थोड़ा सा देख के बताओ. विच इज ओनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स बोथ. Deficiency of protein is kwashiorkor. The deficiency of cow and protein and marasmus. बिल्कुल ठीक. वेरी गुड. चलिए एवरीबडी शुड राइट. फर्स्ट का ओनली ओनली प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्वाशियोर्कर. एंड क्वाशियोर्कर में यू कैन सी हियर इट इज पॉट बेली. है ना? मटके की तरह से नजर आती है. बिकॉज मसल्स बिकम वीक. पेट में स्वेलिंग तो है बट वो लटक भी जाता है क्योंकि मसल्स वीक हो गए. लिखो वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स ओनली इट इज क्वाशियोर्कर. हाँ जी नोबल बॉयज इधर देखो. लिखो लिखो बेटे लिख लो. फर्स्ट क्वेश्चन
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स ओनली डिजीज इज क्वाशियोर्कर। और इसका मेन सिम्टम है पॉट बेली एंड मरास्मस। आप देख रहे हो इसके रिब्स दिख रहे हैं, हड्डियां दिख रही है, मसल्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, कार्ब्स भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है। सो दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स एंड मरास्मस इसकी है पुअर मसल्स, ribs and other bones clearly seen. Underweight body. Underweight body. So this is protein. Then there is one more nutrient. बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सी इन योर वर्कशीट्स। और पॉट बेली को यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, कुछ नहीं है ना, पॉट बेली नजर आ गया है। और इसका आंसर हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज क्वाशियोर्कर। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 पॉट बेली अंडरलाइन कीजिए। आंसर इज क्वाशियोर्कर एंड कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और कैसे ठीक की जा सकती है? बहुत सारी दालें खाओ, एग्स खाओ, सोयाबीन स्पेशली खाओ, दूध पियो। सो दिस next, so we have carbohydrates, we have proteins, and third are fats. I had told you the function of fats. लिखो, सबको बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ उन्हें पता है स्टोर्ड हाउस ऑफ एनर्जी है, बट देयर आर different functions of fats also. तो हम यहाँ पे बात करेंगे। लिखिए, राइट डाउन फंक्शन ऑफ फैट्स। इंसुलेटर ऑफ हीट, storehouse of energy, proper brain growth। और भी बहुत सारे हैं, बट फॉर योर लेवल these three are important. Write down functions of fats: storehouse of energy, they are not used in respiration but they are storehouse, not first used in respiration, बाद में हम ये यूज कर सकते हैं but not initially. ठीक है जी, अभी बुक्स बैग में मत डालो, वर्कशीट बाहर ही रखो, बाकी रख दो अंदर, वर्कशीट्स बाहर। देन फर्स्ट टेल मी, what do you mean by insulators of heat? What do you mean by insulators of heat? Oscar में, yes. The boy in the blue shirt. आजा बेटा. The boy in the blue shirt. Come closer to mic. आजा. जल्दी से जल्दी से. टाइम नहीं है हमारे पास. इसकी हेल्प करो, माइक ऑन करो बेटा. और उसके बाद मैक्सेसे वाले भी अपना माइक ऑन करो बेटा. हाँ जी बेटा. इंसुलेटर का क्या मतलब है बच्चे?
Which? हाँ. Repeat again question. What do you mean by insulator? Which has no electricity. Which has no electricity passer. ये तो तेरे दोस्त ने बता दिया, वो हम कहते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, अब मेरी एक बात सुन. दिस इज, ये एक मेरा हैंड है, इसमें से हम कोई चीज पास कर रहे हैं, लेट अस से कुछ भी, कोई फ्लूइड पास कर रहे हैं कुछ, इट इज नॉट कमिंग टू द फ्रॉम द अदर साइड, सो दिस इज इंसुलेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. सो हमने फैट्स यहाँ पे रख दिए, फैट्स की, लेट अस से दिस इज फैट की लेयर. यहाँ पे हमने एक वुड जो है वो हमने लगा दी, फैट की थिक लेयर है, जला दी, या हीट है, यहाँ पे इस साइड हीट है, बट the heat is not felt on the other side because this fats do not allow the heat to cross through it. That is insulators of heat की हम बात कर रहे हैं. So what do you mean by, लिख लो यहाँ पे, insulators of heat. Everybody, which do not allow heat to pass through it. हमारी स्किन है, उसके नीचे फैट की लेयर होती है, राइट डाउन, अ लेयर ऑफ फैट, a layer of fat is present below skin. If, remember that, यहाँ पे, if it is thin, अगर ये thin layer है, it allows small amount of heat to pass out. अगर ये thin layer है, पतली सी लेयर होती है, it allows certain heat to cross through. But लिख लो, भागो मत, इधर उधर मत जाओ, लिख लो, बस 2 मिनट की बात है, इट्स ओनली 2 मिनट्स. हमारे में थिन लेयर होती है, इसलिए थोड़ी सी हीट बाहर चली जाती है, नो प्रॉब्लम. बट इन केस ऑफ पोलर बियर बिलो द स्किन, ये अगर देखिए पोलर बियर को मार के देखो, कितनी थिक लेयर ऑफ फैट है. You can see that this is the fat layer of the polar bear present below skin. They have thick layer of fat which keeps polar bear warm. ठीक है, तो लिखो इन polar bear, या ये बताइए मुझे कि which animals have more fats. कौन सा आंसर है, ए बी सी की डी? आंसर इज वन, पोलर रीजन एज फैट्स प्रोवाइड. तो आप लिखो, राइट डाउन द एनिमल्स लिविंग इन, animals living in colder regions, animals living in colder regions have thick layer of fat, have thick layer of fat which keep them warm, which keep them warm. So क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे इन असाइनमेंट सी, क्वेश्चन हम बस हम छोड़ रहे हैं फटाफट से. इन असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज ए, fats perform functions such as prevents heat loss.
क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। राइस एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ट्रू की फॉल्स? यस, ट्रू है या फॉल्स है? टेल मी। राइस एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ट्रू की फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। राइस एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स, ये ठीक है। असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। लिख लो, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। राइट डाउन इन योर वर्कशीट, लिख लो। नोबल, आपके पास वर्कशीट पड़ी है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, ये आप बताएंगे, बस ये आप बताएंगे कि रफेज का क्या फंक्शन है, फाइबर का क्या फंक्शन है। यस, नोबल में है। गुड आफ्टरनून मैम। विभूषण में किसी ने नहीं मुझे बताया, पद्म विभूषण में व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रफेज फाइबर्स, बताइए कोई स्टूडेंट, somebody कम। पद्म विभूषण, दिवकरण इज देयर, पद्म विभूषण, माइक ऑन करो। हाँ जी बेटा, आप बताइए। हाँ, Roughage helps in roughage is a bowel movement and prevents constipation. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो रफेज हेल्प्स इन बॉवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो, कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब होता है, जो आपकी पोटी है वो हार्ड हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट करता है रफेज। सो आंसर हियर इज क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज ए, फाइबर मेक्स टूल। फाइबर्स एंड रफेज वन एंड द सेम थिंग, लिख लो। फाइबर इक्वलेंट टू रफेज। Fiber makes tools soft and helps in smooth passing of the tools. So ये लिख लो, fibers are same as roughage, same, and it is obtained from raw vegetables, raw fruits. उससे हमें फाइबर, जूस से नहीं मिलता है हमें फाइबर। किसी के पास भी जाओ, जो साइंस का बंदा है, जो डॉक्टर है, वो कहेगा फ्रूट्स खाओ, संतरे खाओ, संतरे का जूस नहीं, ठीक है। मैंगो खाओ, मैंगो शेक कम पियो, because raw fruits and vegetables have lot of fiber, right? So क्वेश्चन नंबर 5 करना, अगली बार मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगी इसके बारे में, एंड वी विल डू डेफिशिएंसी सिम्टम्स नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू टीचर्स।